Hello everyone, this is Professor Jagdish Pimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. So very good afternoon all. In the yesterday video, we have gone to the definition of data structure. Then we have seen types of data structure. After that, in types of data structure, we learn about the primitive data structure, non-primitive data structure. Under non-primitive data structure, we have studied about linear data structure and non-linear data structure and its related types. So today we are going to see the very important topic, that is algorithm and its characteristics. The same topic we have already discussed when studied about the PhDC. In PhDC subjects, I have already explained about algorithm and its characteristics. So once again, I repeat the same thing. So basically, what is the algorithm? Algorithm यानी होता क्या है? So algorithm is a finite set of instruction or logic written in order to accomplish a certain predefined task. In other language, we can say, or in a technical terms, we can say, an algorithm is a finite set of instruction, or it's a finite set of steps written for to execute a specific task and getting the output in a minimal amount of time. So basically, what it means, your algorithm is not exactly your program. Your algorithm is not all the instructions written in your program. The normal steps for writing the algorithms or we can say, whenever we're going to write any kind of program or any kind of software, if you are developing any kind of software, the normal process is the first of all, you have to first develop the algorithm. After that, you have to do your designing part. That means the first thing is you have to develop the algorithm. After that, you draw the flowchart or you can the architecture of the algorithm or you can the design of the algorithm. And then after you have to do the actual implementation. But normally what happens, we are developing a small program. हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते तो we are directly going to the development phase. हम लोग directly program लिखना start करते हैं. But it is a very wrong habit. Okay? So always whenever we are writing a program or developing some kind of software, so for that you have to write the algorithm first. So basically what is algorithm? So algorithm is a finite set of instruction, or we can say it's a logic, or we can say it's a state. Algorithm means number of steps to take. We can't say all the instructions, whatever we are going to write into the program, we have to put all the instructions as an algorithm state. No, not like that. So algorithm is a well-defined discrete state. The another definition of algorithm is an algorithm is a well-defined discrete state written for to execute a specific task. कोई टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप्स लिखते हैं. So whatever well-defined discrete steps you are writing, so that discrete steps, that number of steps, whenever you are going to write the program with the help of that algorithm, so your program will give a correct output, and that would be in a minimal amount of time. और आपका एल्गोरिदम या फिर जो एल्गोरिदम का यूज करके आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, सो दैट प्रोग्राम विल गिव अ आउटपुट and that would be a correct output and in a minimum amount of time or just a minimal amount of time. That means algorithm लिखना है, it is a well defined discrete steps होनी चाहिए, but जब उसको execute करेंगे algorithm का यूज करके जब हम उसका प्रोग्राम डेवलप करेंगे, so at that time you will get a correct output and that would be your within the minimal amount of time. So that's why we are saying as algorithm is a well defined discrete step होनी चाहिए, well defined भी होनी चाहिए, ठीक है, और आउटपुट भी मिनिमम अमाउंट में आना चाहिए. इट मींस दैट सपोज एक प्रोग्राम आपको लिखना है, suppose the aim of the program is given to you. So the first step is you have to write down the algorithm. So when you are going to write the algorithm, you have to follow the different characteristics of algorithm or you can say properties of algorithm that you need to follow while writing the algorithm. जब भी हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी प्रॉपर्टीज हमें फॉलो करनी चाहिए. सो इन एग्जामिनेशंस वेरी टाइम द वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट इज एल्गोरिदम एंड write down the characteristics of algorithm, or we can say define algorithm, explain characteristics of algorithm, explain properties of algorithm. Like the very first thing is the very first characteristics of algorithm is input and output.
Any algorithm, at least it should have a one input and one output, and more than that also is possible. हर एक एल्गोरिथम में एक तो इनपुट होगा ही होगा, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. Similarly with the output, every algorithm should have a one output and more than one is also possible. Why? Because while writing the program or suppose the task is given to you, so every task required the input data. कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाए तो हर एक टास्क में, हर एक प्रोग्राम के लिए आपको इनपुट सप्लाई करना ही करना होगा. Until and unless if you are not providing the input, so your processor will not get processed your data and will not generate the output. So for that reason, every program, every algorithm should have at least required one. हर एक प्रोग्राम में, हर एक एल्गोरिथम में आपका एक तो इनपुट आउटपुट होगा ही होगा, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. That is the very first condition while writing your algorithm. The second thing is that definiteness. So basically, what it means definiteness. Okay. So definiteness means क्या होता है कि every step of algorithm should be clear and well defined. हमने एल्गोरिथम बोला, एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेट, और कहते हैं एल्गोरिथम इज सिंपली स्टेप्स रिटन इन योर लैंग्वेज. एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि हम कोई प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले वो प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है उसका स्टेप वाइज हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसका एक स्टेप वाइज हम लोग उसका प्रोसीजर लिखे. One simple example is suppose if you are implementing or if you are doing the practical in chemistry lab or you can say in a physics lab. So you will get a procedure list for a particular practical. एक आपको लिस्ट मिलता है, वो लिस्ट में लिखा जाता है कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, लाइक वाइज टिल द एंड तक क्या करना है. सो दैट स्टेप्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द पेपर. And after that, according to that step, you are going to implement or you are going to perform the practical, right? So, what in case of algorithm, in algorithm, you have to do the same thing. So, algorithm is nothing. In general, we can say algorithm is nothing but you are writing the steps in your language for performing a particular task. तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो टास्क कैसा करने वाला है, इस कैसा करने वाले ये हम लोग एक एक स्टेप में लिखेंगे. स्टेप वाइज हम लोग उसका प्रोसीजर लिखेंगे कि ये अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है, ये प्रोग्राम में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाद में ये करना पड़ेगा, बाद में वो करना पड़ेगा, लाइक वाइज आई हैव टू डिक्लेयर अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और गिव अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स. So जो आप स्टेप्स लिखने वाले हो, दैट एवरी स्टेप शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड. जो भी आप स्टेप लिखोगे वो इतने इजी लैंग्वेज में लिखो, इतने अच्छे से लिखो, इतने क्लियरली लिखो ताकि एंड पर्सन जब उसको, ताकि एंड यूजर जब उसको पढ़ता है सो दैट वुड बी अंडरस्टैंड वेरी इजी. आगे वाला बंदा कोई लेना उसको पढ़ता है तो वो इजीली अंडरस्टूड हो सके. इस तरीके से आपको उसके एल्गोरिथम के हर एक स्टेप्स लिखनी है. दैट इज द डेफिनेटनेस. That is every step of algorithm should be clear to the end user. After that, finite algorithm का definition बोला, तभी हमने बोला algorithm is a well defined finite set of instructions, finite set of steps, और यहाँ से finite set of instruction. Finite का मतलब होता है कि कम से कम हमारे algorithm में steps infinite नहीं होने चाहिए. It should be of finite. So what is finiteness? ऐसा नहीं कि मैंने एल्गोरिथम लिखने के लिए बोल दिया, आई इफ आई राइट द एल्गोरिथम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, सो यू हैव स्टार्टेड द फर्स्ट लाइन, बहुत सारी लाइन आपने उसमें लिख दी, कम से कम एक सिंपल से प्रोग्राम के लिए आपने 10 लाइन लिखी. दैट शुड बी नॉट हैपन. सो दैट एल्गोरिथम इज नॉट अ गुड एल्गोरिथम बिकॉज एल्गोरिथम स्टेप शुड बी एज फाइनाइट एज पॉसिबल. जितनी कम से कम स्टेप्स लिख सकती है उतनी स्टेप्स आपको लिखना है. इट मींस दैट जितने कम स्टेप्स लिखोगे उतना आपका प्रोग्राम कम इंस्ट्रक्शंस का बनेगा. जितनी एल्गोरिथम्स की स्टेप्स बढ़ेगी उतनी ही आपका प्रोग्राम फिर लेंदी होते जाएगा. ठीक है. सो ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम लिखना है तो हम हमारे मन से कुछ भी लिख, नॉट लाइक दैट. एल्गोरिथम इतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, इतनी फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, यानी जितना कम से कम हम लोग इतने स्टेप्स लिख सकते हैं उतनी हमको लिखना है ताकि हमारे प्रोग्राम की स्टेप्स कम हो जाए. सो द एल्गोरिथम शुड हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना है, लेकिन जितनी कम से कम स्टेप्स में हमारा वो एग्जांपल सॉल्व हो सके और प्रोग्राम सॉल्व हो सके उतनी हम लोगों को स्टेप्स लिखना है. After that, the last property of characteristics is correctness or effectiveness.
So basically, what it means the correctness and effectiveness. So every step of algorithm must be generate a correct output. ऐसा नहीं कि algorithm, for example, एक मैंने task दिया write a program to perform the addition of three numbers. So एक प्रोग्राम लिखना है जिसके लिए जिसमें आपको तीन नंबर का एडिशन करना है. So first of all, you have to write down the algorithm. Algorithm के आप स्टेप्स लिखोगे, ठीक है. हर एक स्टेप आपके algorithm में इनपुट होगा, आउटपुट होगा, डेफिनेटनेस होगा, यानी आपके तो आपका जो algorithm लिखने वाले हो एवरी स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. फाइनाइटनेस यानी कम से कम स्टेप्स होनी चाहिए. फाइनाइटनेस का मतलब कम से कम. And after that, the next one is correctness and effectiveness. So basically, what is the correctness and effectiveness? So correctness and effectiveness means the every step of the algorithm should provide a correct output. यानी आपने जो स्टेप लिखा है उसका जब आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे आपके प्रोग्राम में तो उसका आउटपुट आपको करेक्ट वे में मिलना चाहिए. नॉट लाइक दैट कि आपने जो स्टेप लिखा है उसका आउटपुट आपको मिल ही नहीं रहा. ठीक है. So every step of algorithm must generate a correct output and that would be of a minimum amount of time. जो भी आउटपुट आएगा कम से कम समय में आएगा. नहीं तो आपने एक एल्गोरिथम लिखा उसका आपने प्रोग्राम बनाया एंड यू विल बी गेटिंग द आउटपुट इन 15 मिनट्स और जैसे इट विल रिक्वायर हाफ एन आवर. ठीक है. नॉट लाइक दैट. जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे कम से कम समय में आपको आउटपुट मिलना चाहिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डेवलपिंग द एल्गोरिथम तो बाय डिफॉल्ट आप उसका प्रोग्राम लिखने वाले. ठीक है. सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मार्केट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट डाउन द एल्गोरिथम. जब एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके बाद उसका डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट होता है यानी उसके फ्लोचार्ट ड्रॉ होता है और फ्लोचार्ट ड्रॉ करने के बाद उसका प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन होता है. दैट मींस वंस यू राइट द एल्गोरिथम आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फ्लोचार्ट. फ्लो यानी बताना है आपको डायग्रामेटिकली कि आपका फ्लो कैसे रहने वाला है. इन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये आपको डायग्रामेटिकली बताना है. सो why diagrammatically बताना है? Because the anyone can see that flowchart and easily understand how actually the working is going on, how program is executing actually. ठीक है. So उसके लिए डिजाइनिंग पार्ट होता है. That is you have to draw the flowchart and finally you are writing the program or finally you are implementing the programs. So that means जो भी आप प्रोग्राम लिखने वाले हो बट नेशनल दैट सेम एल्गोरिथम यू आर गोइंग टू सेलिंग टू द मार्केट. ठीक है. इट मींस दैट व्हाट हैपन कि आपने जो एल्गोरिथम लिखा है वो बहुत छोटे से टास्क के लिए बहुत बड़ा एल्गोरिथम लिखा है. आपका आउटपुट भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है. आपको मेमोरी में स्टोर करने के स्पेस भी बहुत ज्यादा लग रहा है और आपका आउटपुट भी बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है. इट मींस दैट व्हाट हैपन कि जो भी आपके एल्गोरिथम जो भी एल्गोरिथम स्टेप्स लिखने वाले हो सो एवरी स्टेप और यू कैन से एवरी एल्गोरिथम इट शुड फॉलो द characteristics and the properties of the algorithm and that will be your input output definitors finite and the correctness or you can say effectiveness. So all these are the characteristics of algorithm. The next we can say what becomes the algorithm analysis. Once you finish with the task of writing the algorithm, the very second part is and the important part is algorithm analysis. So basically what is the algorithm? Because once you finish with the algorithm writing, the second part is we have to analyze the algorithm. So कोई भी चीज का हम लोग क्या निकालते हैं? एनालिसिस निकालते हैं. So basically analysis in terms of what? So in case of algorithm, whatever algorithm we have written, so that algorithm will be analysis or that algorithm will be comprised with the two terms. The very first thing is prior analysis and the second is posterior analysis. So basically algorithm will be analysis in two different categories. The very first thing is a priori analysis and the second one is posterior analysis. So analysis of efficiency of an algorithm can be performed at two different stages, before implementation and after implementation. कोई भी algorithm लिखने के बाद you have to analyze that algorithm at a two different stages. The first stage is a priori analysis. So basically what is the a priori analysis? The second one is a posterior analysis. Talking about the a priori analysis and the posterior analysis, we have clearly mentioned a priori analysis. This is defined as a theoretical analysis of an algorithm. Efficiency of an algorithm is measured by assuming that all other factors like speed of processor constant and have no effect on implementation. A priori analysis, that means once you implement the particular code, once you write the particular code, you have to analyze that code before execution of that particular code or before execution of that particular program. It means that what?
It will get a of priori analysis. So before implementation or we can say before execution of that particular program, जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आपने एल्गोरिदम लिखा और अभी उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन अभी हमने इसका प्रोग्राम नहीं लिखा है, जस्ट यू हैव ड्राफ्टेड द एल्गोरिदम, आपने एल्गोरिदम ड्राफ्ट कर दिया, अभी आपने उसका कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा। तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम जो भी एनालिसिस निकलता है, सो उस एनालिसिस को बोला जाता है अ priori एनालिसिस। Like a priori analysis will consider the terms will consider the parameters like speed of processor, constant, and so on. So, if you're talking about the a priori analysis, so before implementation, whatever analysis you have predicted, that is just a prediction because you haven't did anything like implementation. आपने सिर्फ एल्गोरिथम लिख दिया, फॉर एग्जांपल एक टास्क दे दिया आपको, टास्क आपने एनालिसिस उस टास्क का आपने एल्गोरिथम ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है, उसका आपने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, उसका आपने प्रोग्राम नहीं लिखा है, ठीक है। सो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन व्हाटएवर एनालिसिस इज देयर, सो दैट इज अ प्योरी एनालिसिस। फॉर एग्जांपल वन सिंपल एग्जांपल इज सपोज मुझे पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बड़ी से एनआईटी कॉलेज जाना है, तो इफ आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम बड़ी टू एनआईटी, so the total analysis is, so suppose it required 1 hour from Buddy to NIT. I required a 1 hour to reach NIT. We required a 1 hour. So it's a total analysis. But when I actually reach to NIT, so we will get a different results. What in the priori analysis or priori analysis, what I say, if I want to travel from Buddy to NIT, it will require a 1 hour. But when I actually travel, it required 1.3 years or 1.1 or 10 minutes like that. That means the posterior analysis is different and the a priori analysis is different. So a priori analysis is based on totally thorough analysis, or we can say it's a theoretical analysis before implementation. So whereas posterior analysis is once you develop the algorithm and according to that algorithm, with the help of algorithm, you have implemented the code. हमने एल्गोरिथम ड्राफ्ट कर दिया, अकॉर्डिंग टू दैट ड्राफ्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेड द कोड। फिर वो कोड को हमने क्या किया, रन किया। वो कोड को रन करने के बाद दैट इज वो कोड को एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, व्हाटएवर एनालिसिस और व्हाटएवर ऑब्जर्वेशन वी हैव सीन, जो भी एनालिसिस जो भी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट मिला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो भी हमने एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को हम बोलते हैं पोस्टीरियर एनालिसिस। तो पोस्टीरियर एनालिसिस दिस इज डिफाइंड एज अ एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। द चोजन एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी एल्गोरिथम आपने लिखा है, सो यू हैव टू डेवलप द कोड विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नेक्स्ट द चोजन एल्गोरिथम इज एक्जीक्यूटेड ऑन द टारगेट कंप्यूटर। जो भी आपने एल्गोरिथम लिखा है उसका जो भी कोड आपने इंप्लीमेंट किया, you have to execute that code on any machine, okay? And after the execution, in this analysis, actual statistics like running time and space period are collected. So in case of a posterior analysis, जब भी हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, so at a time or we can say after execution of the program, you will get the actual statistics related to time and space. These are the two main things, two main parameters we are considering for the analysis of algorithm. For doing the analysis on the algorithm, the first thing is the time and time factor, and the second one is the space factor. So you have cleared with the students theory analysis, that is the theoretical analysis, and the posterior analysis are doing after implementation of your program. After that, we think about the algorithm complexity. So complexity, and actually, suppose X is treated as an algorithm. X is treated as X नाम का कोई algorithm है, and N is treated as the size of the input data. N उसको size लग रहा है input data. N is the size of input data. The time and space implemented by the algorithm X are the two main factors which determine the efficiency of X. That is, algorithm complexity, and we are going to find out if the time and space required for your particular algorithm. That is, कोई भी algorithm का हम लोग टाइम और स्पेस निकालते हैं, कोई भी algorithm हमने implement किया है, and if you are going to find out, if you are doing the analysis on that algorithm, the two major factors are there. One is time and another is space. कोई भी algorithm है, so उस algorithm का अगर analysis हम लोग देखते हैं, so we require the two things. We are considering the two parameters. One is space and another is the time. Because one simple example is given over here. That means suppose X is treated as an algorithm. X नाम का कोई algorithm, and N is treated as the size of the input data.
एन उसको इनपुट एन साइज का उसको इनपुट डेटा लग रहा है. So time and space implemented by the algorithm X are the two main factors which determine the efficiency of an algorithm. सो एक्स नाम का एल्गोरिथम है, उसको एन साइज का डेटा लग रहा है, डेटा का इनपुट साइज है उसका. सो एक्स का अगर मुझे एनालिसिस निकालना है तो एक्स जो एल्गोरिथम है उसके लिए मुझे कितना टाइम लगने वाला है, दैट मींस एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगने वाला है, एंड हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम. दिस टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई भी एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दीस टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज टाइम फैक्टर एंड अनदर वन इज स्पेस फैक्टर. So time factor is nothing the time is calculated or measured by counting the number of keys operations such as comparison in a sorting algorithm. And the space means the amount of space. Like the space is calculated or measured by the counting the maximum memory space required by the algorithm. These two things are very very important. That means one is time factor and the another is space. So what happened in case of algorithm analysis? So everywhere or whenever, just a second. So whenever we are doing the analysis, the question will be asked in the university examination. Write the algorithm and find out the complexity for this particular algorithm. एक कोई algorithm आपको लिखने के लिए बोला है. Every for every algorithm we need to find out the complexity, and we are going to find the complexity in terms of time and space. So कोई भी algorithm के लिए हमें time और space complexity identify करनी होती है या फिर find out करनी होती है. So कोई भी algorithm का time और space complexity अगर मुझे निकालना है, ठीक है. So how, first of all, we understand what is space complexity and what is time complexity, or we can say time factor and space factor, or time analysis or the space analysis. So if you're talking about the time analysis is nothing but the amount of time is required to execute a particular task. एक आपने एल्गोरिथम लिखा है, उसका आपने प्रोग्राम लिखा, सो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट मींस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? द अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क. कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड हाउ मेनी टाइम्स. अभी कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालना है कोड का, कोई एल्गोरिथम का या कोई प्रोग्राम का, तो हम कैसे निकालते हैं? सो वी हैव टू फाइंड कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है. सो समेशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, दैट मींस एक प्रोग्राम में अगर 5 इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पहला इंस्ट्रक्शन एक बार एग्जीक्यूट होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन 2 बार एग्जीक्यूट होगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन 4 बार एग्जीक्यूट होगा, पांचवा इंस्ट्रक्शन सपोज 10 बार एग्जीक्यूट होगा. सो इट मींस दैट एडिशन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूशन स्टेप्स, that is nothing but a total time required for execute that particular program. So always time will be considered as a number of steps, number of execution steps, number of comparisons held in your particular code or held in your particular algorithm. That is nothing but a time complexity. Example question आता है, if you ask to write down the complexity for every algorithm. Suppose if you have a bubble sort algorithm, selection sort algorithm, like merge sort algorithm. So every algorithm is having the time complexity and the space complexity. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट उसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस है, कितनी इंस्ट्रक्शंस कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाली है, उसका पूरा समेशन हम लोग निकालते हैं. तो दैट इज नथिंग बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क, दैट इज नथिंग बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके. After that, this is space complexity. So the second term is space complexity. We have to find out the time complexity and we have to find out the space complexity. So space complexity is nothing but the amount of space is required to store that program into a memory. That is nothing but a space complexity. जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगेगा? 200 MB लगेगा, 1 GB लगेगा, 2 GB लगेगा, 500 MB लगेगा, whatever. So whenever we are going to find out the space, amount of space required for the particular program, that is nothing but we are going to find out the space complexity. इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. कोई प्रोग्राम के लिए हम लोग स्पेस कैसा निकालेंगे? बिकॉज इन एवरी प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में कुछ पार्ट फिक्स होता है तो कुछ पार्ट आपका वेरिएंट होता है. कोई भी एल्गोरिथम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सो हर एक प्रोग्राम में कुछ पार्ट आपका फिक्स रहता है, ठीक है. तो कुछ पार्ट आपका वेरिएंट रहता है. तो फिक्स पार्ट का मतलब क्या होता है? दैट मींस फिक्स पार्ट, दैट इज द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर अ सर्टेन डेटा एंड वेरिएबल that are not dependent on the size of the problem. ठीक है. and a particular अगर डेटा आपको मेमोरी में स्टोर करना है, तो फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा, so we know integer required a 2 byte of memory location, or we can say we require a 16 bit locations, or we can say we required
a 2 byte of memory location to store the integer data. So anybody can say if we declare one particular variable, so immediately we will give a output it is required a 2 byte of location. 2 byte की जगह हमें मेमोरी में लगेगी अगर इंटीजर को स्टोर करना है. So that is a fixed part. Variable part means it is relevant to your dynamic memory allocation part. That means आपके प्रोग्राम में कुछ फिक्स पार्ट होता है तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट अगर आपने यूज किए हुए हैं, सो दैट मींस सम पार्ट इज डायनामिकल. दैट मींस आपके प्रोग्राम में कुछ पार्ट फिक्स्ड है, तो जो फिक्स पार्ट है उसके ऊपर से आप डायरेक्टली बता पाओगे कि नहीं इतना अमाउंट ऑफ स्पेस लगने वाला है, 20 MB लगेगा, 200 MB लगेगा, 500 MB लगेगा एंड सो ऑन. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट अ वेरिएबल पार्ट, दैट मींस वेरिएबल पार्ट मींस व्हाट? Suppose if we are using the concept of dynamic memory location, recursion, stacks, and so on. So at the time, what happened? Suppose if I asked you, how many data you want to process. Someone can say I want to process 10 data. Someone can say I want to process 50 data. Someone can say I want to process 500 data. So there is a difference because अगर 10 data को मुझे process 10 data को मुझे process करना है, it will take a less time. 20 data को अगर process करना है, it will take a less space. Sorry, more space as compared to the 10 byte of data. Suppose if I want to process the 500 MB data, so it will take a more space. So it is depend on the user how much data you want to process. So in a particular program, if we are having only a fixed part or a constant part, we can easily find out the space. अगर मेरे प्रोग्राम में पूरे कांस्टेंट पार्ट है, पूरे जो फिक्स पार्ट फिक्स वेरिएबल्स है, सारी चीजें फिक्स करके रखी हुई है मैंने, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. But if you and we can give a figure also, but the particular program is having some part of fixed and some part of variable part. So variable part in case of the data required. So if you're talking about a variant part as well as the fixed part, so it is very difficult to find out a space complexity for a particular program if the program is having the fixed part and the variant part. अगर आपके प्रोग्राम में कुछ पार्ट फिक्स होगा और कुछ पार्ट वेरिएंट और कुछ पार्ट वेरिएंट होगा, so it is quite difficult to find out a space. Okay, because variant data आपको रन टाइम पे पता चलेगा. ठीक, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, what I told you, how many data you want to process. Someone can say 20, someone can say 500, someone can say 1000. So everybody gives a different answer. So according to that, according to input, our space will get increase or decrease. So that's why it is very very difficult to find out a space complexity for a particular program. One simple example is given over here. Just you can see one simple code is given, that is algorithm sum p comma q ds step 1 start, step 2 r points to p plus q plus 10, p plus q plus 10 and then stop. One simple example is given here. One simple example is given over here. Just we will see. Just look into that example. Now you can see here. See here. So now we have to start, and after that instruction is r pointing to p plus q plus 10. So now see, there is a fixed part. P is a variable, q is a variable, and 10 is a constant value. So we know how much memory is required for variable p, variable q, and simple constant variable 10. So p plus q plus 10. So now here we have the variable p, q and r. हमारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक है r, एक है p and another one is q. यहाँ पे तीन वेरिएबल है, so we can easily find out the size for this particular variable, because suppose pqr is of integer type, so we require a 6 byte of memory location. Okay, if we use a 32-bit computer, so rpq individual variable required a 4 byte of memory location, so 4 things are 12, we require a 12 byte of memory location, and after that 10. So that means एक part जो है, देखिए आप rpq these are the fixed part, that is ये आपका fixed part हो गया rpq, and 10 जो है ये आपका constant part हो गया. ठीक है, that means s of p, that means size of this code known as p, size of p is 1 plus 3. 1 plus 3 is nothing but 1 is your constant value, that is 10, and 3 भी क्या है, 3 कौन सी है, rpq, and rpq these are the variables. ये variables के लिए कितना space लगता है, that means suppose this variable of integer type, so we required 2 byte, that means 2 to the 6 plus जो भी ये 10 है, 10 is also integer, it is also required 2 byte, that means total 8 bytes are required. Suppose if we are using a 32-bit of computer, 32-bit of processor, we required a 4 into 4, that means 16 byte of memory location is required. So now you can think on this. Whenever you want to find out the space complexity for the particular program, it is quite difficult because every program is having the fixed part and the variant part. And for a variant part, we are going to find out the space. It is very difficult because it is totally dependent on the type of input data we have fetched from the input devices or whatever input data provided by the user.
Time complexity is nothing but amount of time is required to store that particular to execute that particular program, that is the time complexity. And the space complexity is nothing but the amount of space is required to store that particular program into the memory known as the space complexity. So I hope everybody is clear with the time complexity, space complexity, after that analysis of algorithm, that is a priori and posteriori analysis, and after that we have already seen algorithm and its characteristics. Hope everybody is clear with this point. Okay. So thank you one and all. Thank you. Thanks for watching this video. Thank you.